आप यूनिक येट एलिगेंट एंड वार्म फील देने का सोच रहे हैं, then consider the sophisticated and mysterious element found in Moroccan style decor. ओहो, मैं भी ना। मोरक्कन स्टाइल वही है जो आजकल आपको पिंटरेस्ट पे इजीली दिख जाते हैं। आप इंटीरियर रिलेटेड इमेजेस देखें या वीडियोस, दे आर अवेलेबल इन वाइब्रेंट कलर्स। ये टाइल्स काफ़ी लग्जरियस लगती है, एक ड्रामेटिक फील देती है स्पेस को, और ये कहें काफ़ी पॉपुलर स्टाइल है जो देखा जा रहा है इन मॉडर्न होम्स। So I thought of renovating my bathroom in budget, and I don't want to shell out on tiles and want to renovate my existing bathroom floor tiles. और जहाँ मैं रहती हूँ ना, यहाँ पर खारा पानी आता है, बोले तो सॉल्टी वाटर आता है, जिसकी वजह से मेरी बाथरूम टाइल्स में पैचेस आ गए हैं जो तो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। एक्चुअली क्या होता है ना, वी थिंक ऑफ चेंजिंग इंटीरियर्स, बट फिर टाइम कंस्ट्रेंट्स, मनी कंस्ट्रेंट्स, बहुत सारी चीज़ें होती है। सो आई थॉट ऑफ कमिंग अप विद एन आइडिया वेयर आई कैन सेव टाइम एंड मनी, एंड लेट्स सी इफ दिस सॉल्यूशन विल वर्क और नॉट. So my idea is to use an adhesive sheet with Moroccan tile print over my bathroom floor. I am not sure for how long it will going to sustain, but करेंगे नहीं तो proof कैसे मिलेगा कि अच्छा option है या नहीं। तो ये शीट्स हैं जो मैंने ऑर्डर करी हैं Amazon से, and I'll be sticking this over my existing flooring, and they are available in affordable prices. So I bought this design and they mention it's waterproof. At least according to seller, but I definitely coming up with a real-time review of this product. So let's begin the process. I begin by cleaning the floor really well. To apply the floor stickers, just fold back the backing paper above 1 inch. Line up the sticker on the tile so that it is straight. Use a ruler or straight edge. Smooth it down as you go. I begin by laying the whole tile first, being mindful of the pattern. It went really quick. So normally Moroccan tiles are easily available in the market as well as online. The price depends upon the size, pattern and quality. In general, it can range from 65 rupees square feet to 300 rupees square feet. I bought this set for 1500 from Amazon, and I must say these pretty peel and stick tile stickers are a game changer. I really love the look of these tile, and it was so easy to achieve without the mess of painting or the cost of replacing. I live real, but how's it supposed to feel? How's it supposed to feel? How's it supposed to feel? If you're looking for a temporary way to renovate or add some personal style to your home, these stickers might be a creative way to make over your home over the weekend. That's all for today. See you in next video. Till then, bye-bye.